नोवेला अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन सर्टिफिकेट के लिए पूरा वीडियो देखें। नोवेल कोरोना वायरस अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अपोलो मेडस्किल्स। टाइप करेंगे अपोलो मेडस्किल एंड क्लिक सर्च करेंगे, पहला ऑप्शन आएगा। वहाँ से आप या तो डायरेक्टली वहाँ पे लिंक से क्लिक करेंगे या तो उसकी वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पे पहला ऑप्शन है एन कोविड, इस पर आप क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। स्लाइड करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर टाइप करेंगे। पहले फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल करेंगे। ये सर्टिफिकेट NSDC अप्रूव्ड है। मोबाइल नंबर, जेंडर, इंडिया और स्टेट में अपना स्टेट करेंगे। उसके बाद यूज़र नेम जो आप चाहते हैं, यूज़र नेम के बाद इसमें पासवर्ड सबमिट करेंगे। पासवर्ड 8 डिजिट होना चाहिए। अगर आप 8 डिजिट से कम करेंगे तो ये आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। यहाँ रजिस्टर करेंगे। जैसे आप रजिस्टर करेंगे, ये यू आर सक्सेसफुली अप्लाइड, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लर्न, इसका एक वीडियो है, आपको देखना पड़ेगा। ध्यान रहे आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप असेसमेंट कर पाएंगे। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आप असेसमेंट नहीं कर पाएंगे और आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। Welcome to the certificate program on awareness and prevention of novel coronavirus disease. The learning objectives of the program. At the end of the program, you will be able to define the novel coronavirus disease 2019, appreciate the need to know about novel coronavirus disease 2019, discuss about the novel coronavirus, understand the modes of transmission of novel coronavirus disease, enumerate the clinical features and complications of novel coronavirus disease, and understand the diagnosis, management, and preventive measures of novel coronavirus disease. Introduction to novel coronavirus disease. The novel coronavirus disease is a global pandemic. Pandemic is a disease that occurs over a wide geographical area and affecting an exceptionally high proportion of the population. The current outbreak of novel coronavirus disease was first reported in Wuhan in China on 31st December 2019. On March 11th, 2020, the novel coronavirus disease outbreak was characterized as a pandemic by the World Health Organization. Why do we need to know about novel coronavirus disease? The novel coronavirus spreads from person to person silently, very easily, and can result in serious complications in a short span of time. It is most important to be educated with the current information about novel coronavirus disease in order to protect yourself and the significant others from contracting the disease. About the virus. The coronaviruses are a large family of viruses that cause illness ranging from the common cold
to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome and Severe Acute Respiratory Syndrome. A novel coronavirus 19 is a new strain that has not previously identified in humans. Coronaviruses are zoonotic. That means they are transmitted between animals and people. Detailed investigations found that in the past, SARS coronavirus was transmitted from civet cats to humans, and the Middle East Respiratory Syndrome coronavirus is transmitted from dromedary camels to humans. Several known coronaviruses are circulating in animals that have not yet infected humans. The virus that causes novel coronavirus disease infects people and spreads easily from person to person. The transmission of novel coronavirus disease. The virus that causes novel coronavirus disease probably emerged from an animal source, but is now spreading from person to person. The virus spreads mainly between people who are in close contact with one another, within about 6 feet, through respiratory droplets produced when an infected person coughs or sneezes. It also spreads by touching a surface or object that has a virus on it, and then touching their own mouth, nose, or possibly their eyes. In this slide, you find a pictorial representation of transmission of novel coronavirus disease infection. In this picture, you see how an infected person is actually transmitting an infection to a susceptible person either through close contact or through airborne droplet infection or through a fomite infection on the surfaces. The signs and symptoms of novel coronavirus disease. The novel coronavirus disease affects multiple systems. The common symptoms that you see are the respiratory symptoms, the systemic symptoms, and the digestive symptoms. The respiratory symptoms are coughing and sneezing, a runny nose, shortness of breath, breathing difficulties, and a sore throat. In severe cases, you may also see signs of pneumonia, severe acute respiratory syndrome, and lungs inflammation and congestion. The systemic symptoms that you commonly see in coronavirus disease are fever and fatigue. You may also see in some cases the digestive symptoms of diarrhea. The other symptoms that novel coronavirus disease presents are the excretory system symptoms, predominantly decreased kidney functions, and in severe cases it may cause kidney failure. The circulatory symptoms are the decreased white blood cells, and in severe cases it may cause cardiovascular damage. The diagnosis of novel coronavirus disease. The diagnosis is made based on clinical features and also a history of international travel or a close contact with novel coronavirus disease positive patients. The Centers for Disease Control and Prevention recommends collection of 3 specimen types, one from a lower respiratory tract, a second one from an upper respiratory tract, and also serum specimens for testing. A real-time reverse transcription polymerase chain reaction, which is shortly referred to as RT-PCR test, is used to diagnose novel coronavirus disease infection. This slide shows the management of novel coronavirus disease. There is no specific antiviral treatment for novel coronavirus disease. People with novel coronavirus disease will get medical care to help relieve their symptoms. The novel coronavirus disease may present with mild, moderate, or severe illnesses. The mild and moderate patients generally have flu-like symptoms and which may self-regress over a period of a week or 2. The severe illness patients presents with symptoms of pneumonia, acute respiratory distress syndrome, sepsis, and even it may lead to a septic shock. An early recognition of suspected patients allows for timely initiation of infection prevention and control. If there is only mild illness, providing care at home may be considered with strict precautions regarding when to seek the care. But to contain the disease, it is preferred to isolate the patient at a healthcare facility and discharge after the patient has been tested negative in 2 consecutive tests 24 hours apart. An early identification of those with severe manifestations allows for immediate COVID-19 transmission
is by being well informed about the novel coronavirus virus, the disease it causes, and how it spreads. Take care of your health and protect others by following the measures and guidelines shared in this course, which are sourced from World Health Organization, the Center for Disease Control, and the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. I thank you for joining Apollo medskills program. जैसे आपका वीडियो समाप्त होगा आपको नीचे ऑप्शन आएगा टेक असेसमेंट, आप यहाँ पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे टेक असेसमेंट नॉट अटेम्प्टेड, अगर आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो यहाँ पे पास दिखाई देगा या फेल जो भी आपका रिजल्ट रहेगा। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है और आपके पास पूरे 10 मिनट हैं। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन करिए, कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही 10 क्वेश्चन अपना सही कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही आप फाइनल अपना क्वेश्चन सबमिट करेंगे आपका सर्टिफिकेट के लिए ऑप्शन आ जाएगा सर्टिफिकेट, आप वहाँ पे सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे सर्टिफिकेट आपका मिल जाता है। यहाँ पे नेम नहीं दिख रहा है, सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिख रहा है, इसके लिए आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। एक बार आप बैठ जाएंगे तो आप क्लोज कर दीजिए और अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो इसके लिए एक नया विंडो ओपन होता है। आप यहाँ क्लोज करेंगे, यहाँ पे देखिए आपने एक्सपीरियंस किया है, पास है और आप अपना सर्टिफिकेट देख सकते हैं। व्यू करेंगे जैसे ही आपका सर्टिफिकेट तैयार है। वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए जिससे इससे काफ़ी लोग अपना फ़ायदा उठा सकें। आप यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसे सर्टिफिकेट की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी सूचनाएं आपको लगातार मिलती रहें। और अधिक आप इस तरह की सूचनाएं पाने के लिए और सर्टिफिकेट की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।